देता हूँ and then we can start. So the aim of today's session is कि we're going to discuss a bit more about Kotlin के next, that is arrays. That's like an important data type that is needed. Arrays, lists, and then we're going to try to dive in a bit into ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, तो हम सारी चीज़ें नहीं सीखेंगे. विल लर्न वॉट एवर वुड बिन रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर बूट कैम्प, ताकि आपको थोड़ा जस्ट आ जाए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है. एंड देन जब आप फ्यूचर में सीखोगे तो ऑफ कोर्स यू विल हैव समथिंग ऑन द बैक ऑफ योर माइंड कि हाँ ऐसा कुछ पढ़ा था, इसके आगे फिर ऐसा ऐसा. सो एंड ऑल्सो देन आप अभी जितना कर रहे हो, व्हेन विल अगेन यूज इट इन बिल्डिंग आवर एप्स, उस टाइम आई ऑब्वियसली हेल्प यू रिवाइज इट अ बिट, कि मैं वापस समझाऊंगा कि ये उस टाइम पढ़ा था, तो उसमें ये सब चीज़ें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ऑल दैट. सो बेसिकली ऐसा फ्लो रहेगा. सो इवन इफ सम थिंग्स आर राइट नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जब हम उसको होल पिक्चर में देखेंगे एज अ होल, आई थिंक दैट शुड बी कंपेरेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन. तो आई थिंक दिस फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज या सो फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि सबके इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल हो गया है क्या. सो बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो काफ़ी हैवी है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है डिपेंडिंग सिस्टम और सिस्टम. So there are some memes also, like Android Studio is very much what do you say, infamous for being very system heavy. So I think if there is anybody who is still not installed Android Studio, you can just go through the session for now. Just the software, yeah, it is like at the beginning it is very intimidating. पिछले सेशन में ना मैंने थोड़ा ओवरऑल वर्क फ्लो ऐसा काइंड ऑफ बताया था कि हमें किस चीज़ों से मतलब है, क्योंकि उसमें 100 चीज़ें लिस्टेड होती है, तो हमें सबसे मतलब नहीं होता है. वी हैव टू वर्क ऑन फ्यू ऑफ देम. ठीक है. तो आज भी मैं जब वील वर्क ऑन इट थोड़ा दे दें, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस कि व्हाट ऑल थिंग्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट टू अस, और जो चीज़ें एक्चुअली लगेंगे एंड बाकी थिंग्स. सो इन केस अगर आई हैव वी हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स टू इंश्योर कि सबके पास एंड्रॉयड स्टूडियो हो. और अल्टरनेटिवली देर इज़ ऑल्सो पोल ऑन द गूगल क्लासरूम, जिस पर आई एम आस्किंग यू गाइज कि काफ़ी बार होता है कि क्लास में बताने का मन नहीं कि नहीं मुझे दिक्कत आ रही है, उस पोल में बता दो. मैं मैसेज करके पूछ लूँगा क्या दिक्कत है. ठीक है. तो जस्ट फिल आउट ऑन द गूगल क्लासरूम, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि कितने लोगों के पास एंड्रॉयड स्टूडियो रेडी है. तो फॉर टुडे सेशन इन केस अगर रेडी नहीं है तो इट्स फाइन, जस्ट वॉच द सेशन, अंडरस्टैंड वॉट वी आर डूइंग, एंड देन आई कैन हेल्प यू एट द एंड ऑफ द सेशन टू सेट थिंग्स अप. कूल. सो लेट्स बिगिन. सो या आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा लिस्ट और एरेज. काफ़ी यूज़ होता है ये जब हम कोई भी चीज़ बिल्ड करने का ट्राई कर रहे होते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. लिस्ट और एरे, वैसे किसी ने सुना है लिस्ट और एरेज के बारे में पहले, किसी ने इम्प्लीमेंट करा है क्या कोई भी आइडिया क्या होता है. या हु इज स्पीकिंग राइट नाउ. अच्छा, ओके, वी कैन स्टार्ट विथ संस्कृति. या संस्कृति, हैव रेज्ड योर हैंड. Hello, am I audible? Yeah, you are. Yeah, actually, I've heard about lists in Python Okay. and arrays I use generally. Okay. All right, fine. So you have heard about it in Python and you have used arrays a bit. Okay. Yeah, Deya, you want to say something? Okay, you have used arrays in Java. Yeah, so it's very much similar here because as we discussed in our very first week कि Kotlin is built upon Java. इनफैक्ट उसकी जो लाइब्रेरीज होती है इम्पोर्ट वगैरह वो सारे अभी भी जावा पे बेचती है. तो दैट इज़ देयर. सो इट्स ऑलमोस्ट वेरी मच सिमिलर. थोड़ा बहुत सिंटैक्स इधर उधर है. या ध्रुवी, यू वांट टू से समथिंग? Yeah, I've used this lists and arrays in Python. Like basically, they both collect information or data or elements. All right. So yeah, some of you have used and some of you have implemented it. So इसका बेसिक जिस्ट ये होता है ना कि लिस्ट और एरेज इसके लिए यूज़ करते हैं कि यू कैन कंसिडर दैट एज व्हाट यू कॉल, लेट्स से एक ट्रेन मान लेते हैं. ठीक है. ट्रेन जिसमें हर डिब्बा इज़ वन कंपार्टमेंट. ठीक है. तो यू कैन कंसिडर योर लिस्ट एज अ ट्रेन एंड उसमें every box, every container of the train is your data storage container. उसमें आप कुछ भी रख सकते हो. तो
ये पूरा एक ऐसे लिस्ट तैयार हो जाता है और आपको फिर आप उसमें यू कैन स्टोर लाइक 100 डिफरेंट नंबर्स इन इट। लेट्स से अगर आपको सीक्वेंस में कि क्लास के 100 लोगों का परसेंटेज स्टोर करना है, ठीक है, ताकि आप उसको बाद में फेच करके लिस्ट में दिखा सको। तो लिस्ट लाइक आई मीन इन अ टैबुलर फॉर्मेट आप उसको बाद में दिखा सको। तो लिस्ट इज़ लाइक अ गुड वे टू गो अराउंड इट। आप क्या करोगे, रोल नंबर 1 का फर्स्ट पोजीशन पे डालोगे, रोल नंबर 2 का सेकंड पोजीशन पे डालोगे। तो सीक्वेंस में आ गया तो उसको बस बाद में अभी स्टोर कर दिया, तो आप इसको कहीं पे भी पास कर सकते हो कोई भी फंक्शन में, और वहाँ से प्रिंट करके वो आ जाएगा। Arrays is also pretty much similar. It helps you to store all the kinds of variables. So list और arrays कुछ नहीं होते, these are like continuous memory blocks जिसमें आप अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल स्टोर कर सकते हो। जैसे अगर आपको 100 इंटीजर स्टोर करने, 100 इंटीजर या 50 स्ट्रिंग साथ में स्टोर करने, सो दिस आर द काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स यूल यूज़, ठीक है। तो इसका बेसिकली यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, तो एक तो मैंने अभी बताया है कि इफ़ यू वांट टू स्टोर द लिस्ट ऑफ परसेंटेजेस, इफ़ यू वांट टू स्टोर अ लिस्ट ऑफ नेम्स, कि बस नाम रखना है कि इस क्लास में इतने 60 लोग हैं और ये 60 स्टूडेंट्स का ये नाम है, तो आप हर क्लास के लिए अलग लिस्ट बना दो और आपका हो गया, आपने सारे बच्चों का नाम उसमें स्टोर कर दिया। तो दिस लाइक अ बेसिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट। तो let's just go about it. So lists are ordered collection of elements. List elements can be accessed programmatically through their indices. तो indices कुछ नहीं होती है बट बेसिकली पोजीशन होती है। तो लिस्ट शुरू होती है 0 से, कोई भी एरे लिस्ट एरे या लिस्ट उनका बेस और नंबरिंग शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे चल जाता है, राइट। सो 0 से शुरू होता है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो प्रोग्रामेटिकली कि आपने बोल दिया कि मुझे इस लिस्ट का 0th एलिमेंट चाहिए, तो वो आपको कोड निकाल के दे देगा। सो दिस इज़ वॉट इट मीन्स, एलिमेंट्स कैन ऑकर मोर देन वंस इन अ लिस्ट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ यूनिक होनी चाहिए लिस्ट में। आपकी लिस्ट में 0 से 100 पोजीशन तक आप बस 5 5 5 5 5 ऐसे भी स्टोर कर सकते हो। तो देयर इज़ नो कंपल्शन ऑफ हैविंग यूनिक एलिमेंट्स इन द लिस्ट। यू कैन हैव लाइक, क्योंकि 2 लोगों का परसेंटेज सेम हो सकता है यूज़ केस में, बिकॉज या नो लाइक बिकॉज इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। 2 लोगों को 90% आ सकता है, तो यू कैन जस्ट स्टोर कि रोल नंबर 5 को भी 90% है, रोल नंबर 6 को भी 90% है। So this is like a whole idea of list. So let's quickly look at the code and we'll try to implement some things out of it. So it says so this is so yeah, majorly there are 2 types of lists पहले। तो लिस्ट अभी हम पहले लिस्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर आरे के पास आएंगे। तो एक होता है इम्यूटेबल और एक होता है म्यूटेबल, ठीक है। इम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आप कुछ चेंज नहीं कर सकते उसमें, ना ही आप उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। अभी जैसे मैंने इधर लिस्ट बनाया ट्रम्पेट पियानो वायलिन, तो ये मेरी लिस्ट है जिसमें मैंने ये 3 इंस्ट्रूमेंट स्टोर किए, क्योंकि मुझे चलो फॉर एग्जांपल मेरे म्यूज़िक रूम में जो है स्कूल में, मेरे को बस लिस्ट बनानी है कि कितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें, तो मैंने डाल दिया ट्रम्पेट पियानो वायलिन। तो अभी ये लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ना इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल मतलब आप उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपको ट्रम्पेट का नाम, ट्रम्पेट के आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, आपको ट्रम्पेट को रीस्पेल करके रीअसाइन करना है, तो आप वो भी नहीं कर सकते हो। जब भी आप लिस्ट डिक्लेयर करते हो, सबसे मेन चीज़ है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल होती है, कि यू कैन नॉट चेंज इट। बट अगर लेट्स से कि हमें ऐसी लिस्ट चाहिए नहीं कि जो हम चेंज नहीं कर सके, हमें लिस्ट चाहिए कि जो हमें हमेशा चेंज कर सके हम, तो उसके लिए यू हैव दिस लिस्ट दैट इज़ म्यूटेबल लिस्ट। और उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, एंड फिर उसमें आपने डाल दिया, तो आप उसमें से फिर रिमूव कर सकते हो, माई लिस्ट डॉट रिमूव, ये ऐसे हट गया, फिर वो हट जाएगा। तो एक बार हम फटाफट इसका पीछे नहीं जाता है, हाँ ओके। तो एक बार हम फटाफट इसका थोड़ा कोड देख लेते हैं। सो शेयर दिस टैब। सो give me one moment. So let's say हमने वैल, ठीक है, किसी को याद है वैल और वैर में क्या फ़र्क होता है? Yes. बताओ। var has a constant value and var variable you can see. ठीक है, चलो सही है। तो अभी इसमें आएंगे हम लिस्ट में वैल और वैर कैसे डिफाइन करते हैं,
ठीक है। तो चलो एक नाम ले लेते हैं अपनी लिस्ट का, लेट्स से कुछ भी नाम दे दो, लेट्स से पांडा, ठीक है। लिस्ट पांडा नाम दे दिया हमने लिस्ट का। तो अभी हमें उसको बनाना है, एक हम डिक्लेयर करते हैं उसमें लिस्ट ऑफ इज इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ। तो ये हमारा पहली चीज़ हो गया। तो हमने इसमें क्या कर दिया, हमने इसको सीधा लेट्स से वी राइट person1 person2। तो ये हमारे ये कौन सा टाइप का डेटा हो गया जो मैं डबल कोट्स में लिख रहा हूँ, स्ट्रिंग। हाँ। तो ये जो भी हम लेटर्स लिखते हैं ना डबल कोट्स में, वो सारे स्ट्रिंग हो गए हमारे डेटा टाइप। तो अभी मैं इसको सीधा प्रिंट कर दूंगा इधर। तो यू सी दिस इज़ आर लिस्ट। तो लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट ना ऐसे स्टोर होती है, 2 स्क्वायर के अंदर ऐसे सब कॉमा डाल के वो डाल देंगे सीक्वेंस में, स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में। तो अभी लेट्स से अगर मुझे इसमें से %2 प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो इसका पोजीशन क्या होगा, जो पोजीशन में से वी डिस्कस दैट इज उसका इंडेक्स राइट, 1. सो उसका इंडेक्स होगा 1 एग्जैक्टली। वाई, बिकॉज नंबरिंग शुरू होती है 0 से। तो दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो इसमें विल जस्ट पास 1 एंड देन व्हेन वी प्रिंट दैट बस %2 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने उसमें से फेच कर लिया। अभी आप देख रहे हो कितना कन्वीनियंट है कि अभी आपने एक बनाया ऐसे लिस्ट लेट्स से 100 लोगों का, ठीक है। अभी आपके पास पूरा डेटा आ गया। अभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रिंट करते समय बोलना है कि मुझे बस लेट्स से person2 का ये चाहिए, जो भी उसका जो भी आपने स्टोर किया है, लेट्स से नेम आपने स्टोर किया है person2 का। अगर आप बोलते हो कि मुझे person2 का नेम चाहिए, तो आपको बस आप इसमें पास कर सकते हो 2 और आपके लिए कोड प्रिंट कर देगा। सो दिस इज़ हाउ कन्वीनियंट लिस्ट्स आर। इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है कि क्या कर रहा है लिस्ट, समझ नहीं आ रहा है वगैरह वगैरह? एनीबडी एनी क्वेश्चंस इन लिस्ट? No, sir. नो, कूल, नो या सर। ऑल राइट फाइन। सो आई थिंक लिस्ट अभी क्लियर है सबको। तो अभी दिक्कत ये है ना कि मैं इसमें चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि आई कैन नॉट राइट लाइक दिस कि panda2 इज लेट्स से panda2 इज इक्वल्स टू लेट्स से समथिंग, ठीक है। I cannot do that because it will. Oh, I think somebody needs to mute. Suraj, can you please mute? Alright, fine. Okay. So yeah. So we cannot reassign thing. Let's say I just want to make it person name. मेरे को 2 को बदलना है, जो अपना person3 है उसको मुझे अगर चेंज करना है, तो आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज इट विल थ्रो एन एरर। इट विल से अनरिजॉल्व्ड नो सेट मेथड प्रोवाइडिंग array access. So basically we don't have access of editing that. तो उसके लिए देर इज़ अ सोल्यूशन। तो लाइक वी डिस्कस्ड कि लिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल होती है, कि हम उसमें से कुछ चेंज नहीं कर सकते, बट नाउ वी वॉन्ट टू मेक इट म्यूटेबल। तो वॉट वी ऐड, वी जस्ट ऐड म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, और फिर हम उस पर अभी थोड़ा ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आते हैं कोड पे वापस। तो हमें बोला है कि उस पर ना तुम बस म्यूटेबल ऐड कर दो, तुम्हारी लिस्ट म्यूटेबल हो जाएगी। तो अभी मैंने रन कर दूंगा ये सेम कोड। तो देखो person2 person3 था इधर पहले पोजीशन 2 पे। पोजीशन 2 क्या है हमारा 0 1 2। तो ये हमारा पोजीशन 2 है। उसमें हमने क्या डाला था person3, बट क्योंकि अभी हमने लिस्ट को किया है म्यूटेबल, वी कैन रीअसाइन द वैल्यू एंड वी कैन रीअसाइन द वैल्यू टू पर्सन। तो मैंने वैल्यू क्या रीअसाइन करी है, पर्सन नेम। लेट्स ट्राई टू प्रिंट इट बिफोर चेंजिंग वंस एंड आफ्टर चेंजिंग वंस। तो पहले वैल्यू है अपनी person3। ओ लेट मी जस्ट प्रिंट इट ऑन न्यू लाइन। तो न्यू लाइन के लिए हम ऐड करते हैं ln। तो अभी पहले प्रिंट हो रहा है जो ओरिजिनल वैल्यू है person3, फिर मैंने इसको रीअसाइन कर दिया। रीअसाइन करना क्या होता है कि मैंने बोला कि जो मेरा लिस्ट नाम है पांडा नाम से जो मैंने लिस्ट बनाई है, उसमें मेरे को जो सेकंड पोजीशन पे जो है दैट इज़ सेकंड पोजीशन 0 1 2, उसके जगह पे मुझे पर्सन नेम डालना है, ठीक है। एंड आई रन इट एंड द कोड डज इट फॉर यू एंड व्हेन यू प्रिंट इट यू सी दैट द वैल्यू इज चेंज नाउ। कूल। तो अभी एक मेजर डाउट ये आता है कि अगर हमारा वेरिएबल वैल था इधर,
ठीक है, और हम बोलते हैं कि वैल में कुछ चेंज नहीं हो सकता, राइट? दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड इन द क्लास in the beginning ki if we have a val kind of thing it cannot be changed. How are we able to change the elements, right? Valid question, right? किसी को आया है क्वेश्चन कि val में हम चेंज कैसे कर रहे हैं? चलो कोई नहीं, तो आई डिस्कस. सो द थिंग इज कि val में द so in the terms of list how val works is कि this particular variable panda that we have assigned now you cannot assign it to any other list, कि ये वाला जो है ना हमेशा इसी लिस्ट में पॉइंट करता रहेगा. अब तुम इसके एलिमेंट चेंज कर सकते हो, तुम इसमें %2 %3 %4 5 डाल सकते हो, but you cannot assign panda to another completely new list. So let us try to do that. We'll see what happens. So we'll just do mutable, yeah, so we'll try to do mutable list and of, and we'll make it let's say person1. हमारे लिस्ट में बस एक ही पर्सन है, ये वाली हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल कि हम वी जस्ट वांट टू हैव वन पर. यू विल सी इट विल थ्रो एन एरर, इट्स ए val cannot be reassigned. सो दिस इज़ हाउ वैल वर्क्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट. वही अगर मैं इसको वैर कर दूँ, ठीक है, और मैं वापस प्रिंट करूँगा इधर अपनी जो पूरी लिस्ट है, आई ट्राई टू प्रिंट इट अगेन, सो यू विल सी इट इज़ रीअसाइंड नाउ एंड अभी पूरी लिस्ट खाली होके बस पर्सन हो गई. सो दिस इज हाउ वैर एंड वैल वर्क्स इन टर्म्स ऑफ लिस्ट. Cool. So let's say I want to assign one more value to the list. ओके, सो लेट्स से हमारे जो एग्जिस्टिंग लिस्ट था अभी, ठीक है, कि ये म्यूटेबल लिस्ट हमने बना दी, बट देन मुझे अभी मेरे को याद है लिस्ट बनाने के बाद कि मेरे पास %4 भी है, लेकिन मैं भूल गया उसको ऐड करने के लिए. था एक दोस्त जो दिखा नहीं क्लास में, तो बस घर पे था वो छुट्टी पे, तो मैं भूल गया ऐड करना. तो व्हाट वी कैन डू इज just do add and then we'll do %4 and then we'll print it again to see if it's added. So I add this. Cool. So %4 is added now, right? अगर I have to remove somebody from the list, let's say कि कोई स्कूल छोड़ के चला गया, but now and you have added %4 आया उसकी जगह पे, but %3 चला गया, लेट्स से नहीं %3, ओके लेट्स से %3 चला गया, सो वी जस्ट डू रिमूव. तो %3 चला गया एंड %4 इज एडेड. कूल. सो दिस इज हाउ इजी यू कैन ऑपरेट विथ लिस्ट एंड यू कैन असाइन एंड ऑल दैट. सो बेसिकली सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिमाग में रखनी होती है वो होती है कि लिस्ट इज़ बाय डिफ़ॉल्ट इम्यूटेबल, कि एक बार आपने लिस्ट डिक्लेयर कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो बाद में. एंड इफ़ यू वांट टू चेंज इट यू हैव टू इंश्योर कि आप डिक्लेयर करते समय बताओ कि मेरी लिस्ट म्यूटेबल है. कूल. तो लिस्ट में किसी को प्रॉब्लम है अभी तक कि क्या हो रहा है क्या नहीं? जब भी हम कोई भी कि वैल्यू के सामने जब ऐड वगैरह कॉल करते हैं ना, तो मैं बताता हूँ ये काम कैसे करता है. तो ये होता है कि आपने अभी लिस्ट बनाई एक जिसका नाम हमने रख दिया पांडा, और तो ये क्या होता है कि लिस्ट का ना एक कोड ऑलरेडी लिखा होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है. तो उसमें एक फंक्शन उन्होंने लिखा है जिसका नाम है ऐड और रिमूव. उन्होंने पहले कोड बना के रखा है, और जैसे हम फंक्शन में डिस्कस कर रहे थे कि पैरामीटर्स पास वाले फंक्शन भी होते हैं जिसको पैरामीटर्स लगते हैं फंक्शनिंग के लिए. देयर आर सम दैट काइंड ऑफ फंक्शंस, अगर इफ़ यू गाइज रिमेंबर, कि जो बोलता है कि मुझे रन होने से पहले कुछ चीज़ें चाहिए. तो उनके जो ऐड वाले फंक्शन में उन्होंने पैरामीटर दिया है कि उसको भी कुछ चीज़ें चाहिए कि जो मैं लिस्ट में ऐड कर सकूँ. तो बेसिकली पांडा डॉट ऐड व्हाट इट डज इज, जो भी उन्होंने कोड लिखा है उसमें से ऐड फंक्शन को वो कॉल करता है एंड देन इट आस्क्स कि क्या ऐड करना है. तो दैट इज़ व्हाई वी पास इट एक्सप्लिसिटली %4 एंड देन इट एड्स इट टू द लिस्ट. दिस इज हाउ इट वर्क्स इन द बैकग्राउंड. आपको थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब मैं सिखाऊंगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें यू रियलाइज कि हाउ दैट डॉट थिंग इन बिटवीन प्लेज द रोल. बट यू जस्ट नाउ राइट नाउ नीड टू रिमेंबर कि वेरिएबल नेम डॉट ऐड करेंगे तो लिस्ट में ऐड हो जाएगा, लिस्ट का वेरिएबल नेम डॉट रिमूव करेंगे और उसमें पास करेंगे तो वो चीज़ रिमूव हो जाएगी. कूल. सो लेट्स गो टू और क्या था, ठीक है. तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि लिस्ट ऑलवेज स्टार्ट विद 0. लिस्ट हो एरे हो जो भी होता है प्रोग्रामिंग में, एरे लिस्ट भी होती है एक, वो बाद में हम करेंगे. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0.
So like you guys are learning from me. कभी किसी को मत बताना गलती से भी कि लिस्ट 1 से स्टार्ट होती है. I'll be very disappointed. That's like a very fundamental thing. काफ़ी मीम्स बन चुके हैं इस पॉइंट पे बिकॉज ना इट्स वेरी कन्वेंशनल कि एवरीबडी स्टार्ट्स काउंटिंग फ्रॉम 1. हम हमेशा 1 से काउंटिंग शुरू करते हैं बट प्रोग्रामर्स का स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 0. ठीक है, डोंट डू इट इन रियल लाइफ बट कोड में याद रखना कि हमेशा आपका जो है वो 1 से नहीं 0 से स्टार्ट होता है. सो लेट्स टॉक अबाउट arrays. Arrays store multiple items. Arrays can be accessed programmatically through their indices. List जैसा same. Array elements are mutable. Array size is fixed. तो अभी array का ये सीन है, सब कुछ सेम है, वो लिस्ट जैसा ही काम करता है. आप उसको प्रोग्रामेटिकली एक्सेस कर सकते हो इंडेक्स नंबर से. एरे बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल होता है. बट व्हेन आई से म्यूटेबल दैट मीन्स कि आप उसके जो जैसे डॉग है आप उसको चेंज करके कैट कर सकते हो, कैट को चेंज करके माउस कर सकते हो. बट यू कैनॉट ऐड और रिमूव एलिमेंट्स वंस द एरे इज डिक्लेयर्ड. दैट इज़ वेयर एरे इज डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट. कूल. सो बाकी सब फंक्शनिंग सेम है. एरे का एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि वो बाय डिफॉल्ट म्यूटेबल तो होता है बट एरे का म्यूटेबल मीन्स कि यू कैन जस्ट चेंज द एलिमेंट्स, यू कैन स्वैप द एलिमेंट्स, उसको रीअसाइन कर सकते हो. कैट को डॉग बना दिया बट अगर आपके एरे में बस 3 एलिमेंट है तो वो हमेशा 3 एलिमेंट्स ही रहेंगे. आप कुछ निकाल नहीं सकते उससे 2 बिकॉज एरे डज नॉट हैव दैट बाय डिफॉल्ट डॉट ऐड. जैसे पेट्स डॉट ऐड नहीं कर सकते हो आप एरे पे, ऐसे सिमिलरली पेट्स डॉट रिमूव भी नहीं कर सकते एरे में. सो दैट इज़ लाइक अ मेजर डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिस्ट. अब आप बोलोगे कि क्या अगर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल भी चाहिए और मुझे लिस्ट जैसे फंक्शनैलिटीज़ भी चाहिए तो बिकॉज एवरीबडी वांट्स दैट कि ये दोनों का कन्वीनियंस साथ में आ जाए. दैट इज़ वाई देर इज़ अ न्यू काइंड ऑफ लिस्ट दैट इज़ एरे लिस्ट, जो नाम सजेस्ट करता है एरे और लिस्ट का कॉम्बिनेशन है. इट वर्क्स ऑन द टॉप ऑफ दिस विच वी विल लर्न एन एक्सपेरिमेंट वेल वी आर डूइंग एक्चुअल एंड्रॉयड में जब करते हैं तब. अभी उसके ऊपर भी वुडेंट तो बट एरे का एक छोटा सा एग्जांपल ले ही लेते हैं हम लोग साथ में ही. सो लेट्स से वी वांट टू ट्राई ये लेट्स से दिस एरे ऑफ इसको शेयर दिस टैब इंस्टेड एंड आई जस्ट हाँ. सो ये हमारा पेट्स नाम का एरे है. तो इसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डिपेंडिंग ऑन हाउ एरे स्टोर्स ना, जैसे एरे का कोड लिखा है उसमें ना आप ऐसा नहीं कर सकते कि सीधा जैसे हमने लिस्ट को सीधा प्रिंट किया था ना वैसे आप एरे को प्रिंट नहीं कर सकते सीधा. मैं बताता हूँ क्या होता है. तो एरे जिस तरीके से रिटर्न है ना उस तरीके से आप अगर उसमें सीधा प्रिंट करोगे तो वो एक एड्रेस काइंड ऑफ थिंग रिटर्न करेगा. मतलब आपकी मेमोरी स्टैक पे कहाँ पे स्टोर्ड है उस पर्टिकुलर एरे लिस्ट की एक यूनिक आईडी होती है. जब भी आप नया एरे लिस्ट बनाते हो तो एरे का प्रिंट बेसिकली रिटर्न्स दैट. इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट थिंग यू ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग, राइट. यू कन्वर्ट इट टू स्ट्रिंग एंड प्रिंट इट. तब क्या होता है, तब एरे को वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और उसको ये कर देता है नॉर्मल जैसे हमने लिस्ट को प्रिंट करा होता है वैसे. लिस्ट जैसे इट्स वाई दिस इज़ हैपनिंग डिफरेंटली बिकॉज लिस्ट को अलग तरीके से स्टोर किया जाता है, एरे को अलग तरीके से स्टोर किया जाता है. तो जैसे लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट डॉट ऐड वगैरह है वैसे एरे का जो बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं जो ऑलरेडी कोड में लिखी है दैट डजंट सपोर्ट डायरेक्ट प्रिंटिंग. सो दैट इज़ वन थिंग. सो लेट्स से वी वांट टू चेंज डॉग की वैल्यू. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे. Anybody wants to go ahead if you want to change dogs की value. Anybody on the meet wants to just say how would we go around changing value of dogs. Can we use that like dot change? Dot thing is Yeah. like yeah. So arrays does not have that. So like the thing you're talking about, dot add and dot remove, you cannot majorly in arrays for removing and adding. Anybody wants to go ahead and to tell me how we can change the value of dog to something else. चलो कोई नहीं. तो कोई ये बताना चाहेगा कि हाउ डू वी गो अहेड टू प्रिंट पर्टिकुलरली डॉग फ्रॉम दिस एरे. सेम लिस्ट जैसा सीन है उसका भी. इफ़ आई जस्ट वांट टू एक्सेस डॉग, पूरा नहीं प्रिंट करवाना है मुझे बस एक चीज़ प्रिंट करवानी है उसमें से. या राइट, पेट्स ऑफ 0. तो वाई डू वी डू पेट्स ऑफ 0. सो लेट्स से ये हमारा पेट्स है.
ये जो वेरिएबल है पूरे एरे का, उसमें से डॉग कौन सी पोजीशन पर है, 0th पोजीशन पे, तो हम बोलेंगे पेट्स ऑफ 0। तो अभी ये जो पूरी वैल्यू है उसमें बस डॉग स्टोर्ड हो गया, क्योंकि हमने बोल दिया कि पेट्स ऑफ 0 हमें एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, इसको हम सीधा प्रिंट कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्रिंट द एंटायर एरे डायरेक्टली, बट वी कैन डेफिनेटली प्रिंट पेट्स ऑफ 0 एंड इट विल गिव अस डॉग। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हम डॉग की वैल्यू कैसे एक्सेस कर रहे हैं। हम डॉग की वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं पेट्स ऑफ 0 करके। ठीक है, तो अभी मुझे इसको चेंज करना है, तो अब क्या करेंगे हम इसके आगे? एनीबडी वांट्स टू गो अहेड? किसको समझ नहीं आया कि पेट्स ऑफ 0 क्यों करा है हमने डॉग एक्सेस करने के लिए? कैन आई जस्ट हैव शो ऑफ हैंड्स, विल आइटरेट ओवर इट वन सेकेंड। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इट्स फाइन। थोड़ा सा इफ इट्स, या मृगांक, क्या, टेल मी। मृगांक हैज़ अ क्वेश्चन एंड देन Manan. Okay. Oh, you guys have a question or you want to try to answer? Just unmute and speak. So I have a question. If we are specifying it in the second line pets of 0, so why we are again specifying it in println? So why are we again specifying in println? Is it? Yeah. So the thing is ki the pets of 0 and the line before that is doing practically nothing, because we just have written ki pets of 0, that's all. But you need to tell print what it has to print, right? Okay. Yeah, so like if I don't, if I make it c is equals to this, and then I can then put c here, so it would print the same thing. Oh sorry, so c basically val c, and if I then put it here, so this, unless you assign this to anything or do something with it, this line makes no sense practically, because nothing is happening here. You have just said pets of 0, but uska kya? Pets of 0, so this entire thing on the code level is equal to dog. That is what this entire thing is, but you are doing nothing ahead with it. So yeah, anybody, yeah, others were also having doubt. I saw hands, I saw Mrigank raising his hand. Yeah, Mrigank. It was his mistake. Sorry. Okay. Anybody else has any doubt? समझ नहीं आ रहा है why have we done pets of 0 and list कैसे काम कर रही है basically? पूछ लो, don't be like hesitant. It's fine. I'll just go over it again. It's not a major problem. ठीक है, तो बेसिकली तो अभी हमें क्या करना है, पेट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू डॉग, तो हमें इस वाली पोजीशन का एक्सेस इससे मिल गया। तो हम बस बोलते हैं कोड को, इसको हमें रिप्लेस करना है लेट्स से पपी से। ठीक है, एंड देन आई ट्राई टू प्रिंट पेट्स ऑफ 0, सो नाउ यू विल सी इट इज़ बीइंग चेंज टू पपी। अब इन दिस पर्टिकुलर थिंग किसी को समझ आया कि नहीं, या इज़ देयर एनीबडी हू डिड नॉट अंडरस्टैंड कि ये कैसे चेंज हो गया, और वाई इज़ दिस हैपनिंग? एनीबडी, एनी स्पेसिफिक डाउट रिगार्डिंग दैट? तो सबको समझ आ गया मोस्टली, या गरिमा? या Yes. Why did we write print ln? Like we can write just print as well. yeah, we can write print as well. That's not a major problem. It would give the same output unless we print something after that. So basically print and println do the same job. So that's, you'll see it gives the same output. So not a major big problem in that. Anybody else? ओके, तो ये क्लियर है सबको क्या क्या होता है? ठीक है, तो देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि लिस्ट में ना आप मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। जैसे सॉरी, एरे में आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइप। जैसे ये हमने लिस्ट में सारे इंटीजर स्टोर करे थे, या फिर हम सारे स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं लिस्ट में। एरे में आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रिंग, एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग ऐसे कर सकते हो। लिस्ट डज नॉट अलाउ दैट। ठीक है, तो बेसिकली वो एक अनदर थिंग अबाउट लिस्ट एरेज इज कि यू कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा, which again is there in this particular slide ki okay, so you can just store basically
मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा. तो उसके लिए क्या होता है कि जब भी आप ऐसे डिक्लेयर करते हो कि array ऑफ, उसका मतलब है कि यू आर ओपन टू पुटिंग एनीथिंग. बट हो सकता है कि आपका सिनेरियो ऐसे कि आपको एरे ही यूज़ करना है ताकि आपका जो वैल्यूज़ है वो आप चेंज कर सको, बट यू डोंट वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द लिस्ट. So in that scenario, what you can do is you can just make it int array of. Cool. So I'll just run the code for you to see what happens when we do int array of. So it says type mismatch input, the like input type is string but int was expected because we pass string in it. So if we do it 2 and then we make it 3, so that should be then fine to go ahead with. So 2 gets printed because on the 0th position there is 2. Cool. So if you want to specifically make it work for array of integers, so you can just write int array of. But if you want to have an array of mixed kind of it, so you can have just array of, and you can put different mixed types of data types in it. Cool. So that is about arrays. So let me reiterate, how is arrays different from and yeah, you can basically just add two arrays also कि ये एक array हो गया अपना, ये एक array हो गया, and you just combine it into थोड़ा सा. उसमें आप बस जैसे normal आप number addition करते हो ना, वैसे आप array के variables के addition कर सकते हो, and it would be converted into a one single array of big all of this. जैसे like it says 4 5 6 1 2 3, तो ये proper पूरे array में convert हो गया इधर. So arrays support direct addition between two arrays. तो लेट्स डिस्कस अबाउट थोड़ा बहुत इसका देखते हैं कि क्या क्या है. तो ये डिक्लेरेशन, तो ये टेबल है ना, थोड़ा मैंने आई आस्क्ड ChatGPT टू क्रिएट अ डिफरेंशिएशन टेबल सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड इट. सो साइज डायनामिक फिक्स, तो लिस्ट की साइज आप चेंज कर सकते हो. दैट मीन्स इट्स डायनामिक, यू कैन ऐड एंड रिमूव एलिमेंट्स. फॉर array you cannot do that. So mutable type and array, so this is like a basically a declaration. So if you want to make list mutable, you write mutable list of, wherein if you want to make array mutable, it is mutable by default, right? Element access, if you want to access any particular element at any position, जैसे हमने pets में से 0 नंबर वाला access किया था, या हमने पांडा में से 0th पोजिशन वाला पर्सन या फर्स्ट पोजिशन वाला नंबर एक्सेस किया था. फॉर दैट इट्स लाइक अ बेसिक माई लिस्ट इज योर लिस्ट नेम विच इन आर एग्जाम्पल वॉज पांडा, एंड देन इन द स्क्वायर ब्रैकेट यू जस्ट पास कि आपको कौन से पोजिशन वाला एलिमेंट चाहिए, दैट इज इंडेक्स. कूल. सो एलिमेंट मॉडिफिकेशन इज इम्यूटेबल एंड हियर इट इज़ म्यूटेबल. सो जैसे हमने बताया था कि एरे का बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन स्वैप द एलिमेंट्स, राइट? यू कैन स्वैप द एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट कि अगर जैसे हमने अभी डॉग को पपी में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज़ फाइन इन एरे. बट इन लिस्ट यू हैव टू मेक द लिस्ट इम्यूटेबल पहले. सो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ इम्यूटेबल. यू कैन नॉट बाय डिफ़ॉल्ट इफ़ यू नॉट डिक्लेयर द लिस्ट एज इम्यूटेबल, you cannot change the swap the elements basically. सो जैसे हमने एडिंग और रिमूविंग एलिमेंट देखा था लिस्ट में, डॉट ऐड डॉट रिमूव से कर सकते हैं. एरे में सपोर्टेड नहीं है वो, ठीक है. फॉर एलिमेंट इन माई लिस्ट, सो दिस लाइक हाउ यू आइटरेट. एंड परफॉर्मेंस वाइज एरेस फास्टर होते हैं, लिस्ट थोड़ा स्लो होता है. एंड फॉर यू यूज़ लिस्ट, यू यूज़ एरे व्हेन यू हैव परफॉर्मेंस क्रिटिकल सिनारियोज, जैसे काफ़ी बड़ा आपका डेटाबेस है, उसमें अगर यू हैव टू आइटरेट, तो अगर आप लिस्ट यूज़ कर रहे हो तो काफ़ी स्लो हो जाएगा परफॉर्मेंस, लाइक बिकॉज लिस्ट का फंक्शनिंग ही थोड़ा स्लो है, वेरस एरे का फंक्शनिंग फास्ट है. तो अगर आपका डेटाबेस काफ़ी बड़ा है, काफ़ी यूजर्स है आपके पास, तो आप एरे प्रेफर करोगे. तो दैट इज़ लाइक मोर लाइक अ ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट. सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट, बट इट्स लाइक जस्ट देयर फॉर देयर. आइट्रेशन इज़ लाइक फॉर एलिमेंट, लाइक जैसे अगर आपको हर एलिमेंट को थ्रू जाके प्रिंट करना है, तो यू कैन जस्ट पुट इट इन द फॉर लूप विच इज़ लाइक दिस. कूल. सो दिस इज़ लाइक अ बेसिक कंपेरिजन ऑफ ऑल ऑफ लिस्ट एंड एरेस. इसमें किसी को कुछ भी डाउट है अभी एरे और लिस्ट में, फटाफट पूछ लो, सो दैट वी वुडंट बी कमिंग बैक टू दिस टॉपिक अगेन इन दिस सेशन एटलीस्ट. अगले सेशन में अगर या फिर सेशन के बाद डाउट है तो पूछ सकते हो. इसमें अभी किसी को डाउट Sir, है? what is iteration used for? ओ या, एक काम करते हैं, आइट्रेशन का एग्जांपल दे देते. तो जैसे हमारे पास ना, तो ये यूज़ करता है फॉर एलिमेंट इन पेट्स print
element. Oh, sorry, unexpected. Just put it in a bracket, never mind. So for element in array of, wait, for element in star, for element in, what's the matter, unresolved ambiguity. Just one moment. I think Don't we have to use that dollar sign? no, we don't have to use dollar. Your dollar is used when you particularly want to change your what do you say, you want to include a variable in a sentence, like string कोई sentence है आपको, उसमें आपको variable substitute करना है, तो अब आप वो dollar use कर सकते हैं. So item in list, so no element, so I'll tell you what it was. So let me just go back to it. So element in path, so basically it's just the same thing. Element is a variable that we have used here. Let me just so this is like, let's say we have assumed a list here, ठीक है, तो we have done that, and then iteration क्या करता है basically for item in list. तो for item in list क्या करता है, item is a variable that we are using here. It takes the values for all the items in the list, right? It takes all the values for the items in the list. So पहले अपना item होएगा apple, then it will become banana, and then it will become orange for the loop runner. Cool. So it's basically used to loop over all the elements in the list and just print it. अभी इसमें Like you previously, yeah sir, you like previously used elements. So what's the difference between elements and these items? So like I think you can even use element. I think there was some problem in the declaration previously, so it shouldn't give a lot. Yeah, it's the same thing. You can even use a here. That's your user defined thing. Yeah, so you can have any of it. So a in list, so like that. So even if you want to make it for array now, array of, yeah, it would work the similar way. In the previous time it was like we used the integers in the array, and we did not write array of int array of, so there was an ambiguity issue because our array had all integers, and like this was the issue last time. So oh, it worked. I don't know what was the issue then last time. Maybe there was some declaration issue, but yeah. So basically what iteration does is, for a in list it would take all the values. Now where can we use this? So let me just give you one very cool example of this. Let's say you have a user of you have a student, full topper banda hai, 95%. Then there is somebody who has 85%, and then there is somebody who is what 30%. Cool. So what we can do now is that, let's say we want to create another list of grades, because schools में I think grades देते हैं ना अभी भी. मेरे टाइम पे तो grades ही दे रहे थे, तुम लोग तो अभी 3-4 साल ही पीछे हो, तो Yes. हाँ तो ठीक है, तो grade दे रहा हूँ. तो करते हैं अब इसमें, we can do if a is let's say greater than 90, print student has a grade. चलो अभी मुझे नेक्स्ट कंडीशन चेक करनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? Anyone want to? Else if. Yeah, perfect. So I'll use else if. So let's say we want to create another bracket of if else if a is greater than what 80. I'll say print student as B grade.
and then if I'll say else if again a is less than 35, I'll do print student has failed. ठीक है, तो चलो इसको रन करके देखते हैं फिर. ओ println करना पड़ेगा, otherwise it will keep on appending. If you don't use println, it keeps on printing on the same line. आगे आगे आगे. चलो, a is a grade, b grade, and student has failed. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास हर लूप में a की वैल्यू आती गई और हमने हर लूप में चेक करते गए हम लोग. तो पहली बार लूप रन होगा, a की वैल्यू होगी 95, तो दिस कंडीशन सेटिस्फाइड प्रिंट करते हैं, बाकी सारा इग्नोर हो गया, तो हम वापस लूप में जाते हैं. ये लूप जब तक सारे लिस्ट के एलिमेंट्स एंड नहीं हो जाते तब तक चलता रहेगा. आई कैन लिटरली ऐड लाइक 82 in it and it would still work for it because it would keep on running until the list has ended. A will take all the values in the list. First time पे, first iteration पे a will become 95 and then this just checked and ये सारे फिर चेक नहीं करेंगे because ये satisfy हो गया, तो हम आगे पे चले गए, तो a की वैल्यू चेंज हो गई 85 पे. तो अभी ये सेटिस्फाई हुआ क्योंकि ये फेल हुआ था, तो नेक्स्ट चेक हुआ, ये सेटिस्फाई हुआ, ये कुछ चेक नहीं किया, देन a की वैल्यू बिकम्स 30. तो फिर ये चेक हुआ और ये दोनों फेल हो गए, फिर ये चेक हुआ कि 35 वाला, तो वो हो गया, फिर a की वैल्यू वापस हो गई 82, फिर ये सेटिस्फाई हुआ, देन कोड स्टॉप्स एंड देन इट गोज ऑन, एंड देन क्योंकि वो लास्ट एलिमेंट था नथिंग हैपेंस फर्दर. सो आइट्रेशन कैन बी यूज्ड इन दिस मैनर कि अगर आपको बहुत बड़ा डेटा सेट है बट उसको आपको सेम टाइप की फंक्शनिंग करनी है उसमें, जैसे ग्रेड असाइन करना हो गया या इवन या इवन परसेंटेज कैलकुलेट करना हो गया. लेट्स से यू हैव लाइक अ टोटल ऑफ 5 आउट ऑफ 500 मार्क्स है आपके पास बच्चों के, बट आपको हर बंदे का परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो आप इसमें स्टोर कर सकते हो. और आप फॉर ए की जगह पे जहाँ पे हमने इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 90 कर दिया, उसकी जगह पे बस हम क्या कर देंगे, अब हम उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर देंगे. हम बोलेंगे वॉट एवर ही गॉट 495 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, और फिर हम उसको स्वैप कर सकते हैं. सो दिस इज सो आइट्रेशन इज ऑल्सो फेयरली वेरी इंपॉर्टेंट. बीइंग एबल टू आइट्रेट थ्रू लिस्ट. किसी को समझना है कि लिस्ट के ऊपर आइट्रेशन कैसे हुआ अभी? एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट? ओके, डू वी गॉट इट? एनीबडी हु डिड नॉट अंडरस्टैंड? किसी के लिए डिफ़िकल्ट हुआ ये काफ़ी वगैरह वगैरह? चलो, cool. So I think everybody's gotten it. Perfect guys, you guys are seemingly very smart. So या फिर झूठ बोल रहे हैं मुझसे, तो कुछ तो एक हो रहा है. तो आई थिंक ना अभी काफ़ी ज़्यादा ये हो गया है, लिस्ट पढ़ लिया वगैरह वगैरह, तो बोर हो गया हो क्या सब लोग? ये बताओ पहले. नो सर. ओके, तो थोड़ा ये एंड्रॉयड का कर लेते हैं, मोटिवेशन आ जाएगा थोड़ा लाइक कि भाई करा है कुछ, क्योंकि इसमें तो बस कमांड लाइन पे कोड लिखते हैं ना. तो एंड्रॉयड का कर ले थोड़ा फटाफट. तो एक काम करते हैं, अपने अपने फ़ोन्स निकालो सब लोग और एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लो. विल ट्राई टू डू समथिंग इन एंड्रॉयड टुडे. विल ट्राई टू गेट यू गाइज हैव योर फर्स्ट एप्लीकेशन बिल्ड. So I think I'll just share a window of, yeah, so I think this is visible now. Is my the screen visible? Cool. So let me know let me know once you guys have started your Android Studio and also have your phones around. तो जब वो सब सेटल हो जाए ना, नीचे का लोडिंग वोडिंग बंद हो जाए सब उसका, तो मुझे बता देना कि हो गया, वी आर रेडी टू डू समथिंग नाउ. ओके, सानवी इज रेडी. परफेक्ट. तब तक I'll okay, Mrigank is ready. तब तक I'll try to connect my phone to help you guys understand. Meet. Okay, perfect. So
Where is this cheat? Monica is also done. Cool Sanskriti is done. Couldn't connect to internet. Weird. Adityan is done. Cool. Alright, Soumya is also ready now. कितने लोग हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 okay. Who will need more time? ओके तो जब तक वो चल रहा है उसको चलने दो. I'll just connect my phone and guys, you can take your phones in your hand and we'll try to enable the developer mode in that. So create a new meeting. This is for WhatsApp. Okay. So yeah, so is the phone screen visible? Oh wait, sorry, I haven't shared it. Oh my bad. Share screen, start sharing. Yeah, so is the phone screen visible now, guys? Yes, sir. Yeah, so what you have to do is go to the settings of your phone. Alright, so scroll at the very bottom, you will see a about phone section. About phone, tap on that, open about phone. Now this might be a bit different for different company brands. So our motive is to go in the information software information part and find what do you call the build number. As you can see, the build number is what our motive that we have to find. So at least in Samsung phones, you can go in the about and you can go in the software information and there you will see build number as written. For some phones, the moment you tap on about, you might see build number right there. So have you guys figured it out? Can I have a show of hands who all have found build numbers on their phone? Okay, so I think people are still searching. So go to the about phone section. Under the software information, you'll find build. In case you're not able to find, okay, Dhruvi has not been able to find. Dhruvi, you can just maybe try to Google it once where your phone is. Usually it is always in the about phone section. You can try to tap some more options like software information or some other option that you might have, and you would see build number there. Yeah, or if you're still not able to find it, you can just type your phone's model number and Google it, where is the build number for this phone. So you'll be able, you'll usually get it. Anybody else who is not able to figure out where the build number is? कोई है जिसको नहीं मिला है अभी तक build number? They're still searching. ठीक है, so I assume सबको मिल चुका है build number, so we'll go ahead what to do. So what you have to do is just go on tapping on build number, just tap and you'll see you are now 3 steps away from being a developer, you are now 2 steps away from being a developer, and you are now 1 step away. Just go on tapping until it probably asks you for your pin or something, and then it says developer mode has been enabled.
Did you guys reach this stage? Did you see Sir, that? in my phone, it's saying developer options. So that's the same thing, I think so. Yeah, developer mode and options are the same thing. Yeah. So basically, it should say something is enabled after you have continued to tap with it. Anybody who has not been able to reach that stage, who has not been able to figure out everybody's developer options is enabled. Okay, Dhruvi is still searching. Dhruvi, what is your phone model? Redmi. Okay, Redmi. Uh, Redmi. You wanna have build number. Okay, wait. Redmi build number. So I think okay, for Redmi it is okay. It still says the same words thing. Okay, it's under settings about phone, and it should be under your Android version section, or you can just tap on your Android version, and that should show you the same things. Tap on Android version for 7 times. Okay, did you see Android version there, Dhruvi? Yeah, I saw. Are you able to tap on it like 7 8 times, and does it show you a pop-up? Something very colorful kind of thing. Just Okay. Just below that, do you see a MIUI version? no. Ah. Just kind of like something P and then some kind of Oh, so circle that's okay. pattern. Sorry, that opens Android. This then. Go back to the same page where you saw Android version. Go back to the same page. Okay, I'm in that page. Yeah, you're on that page. Do you see a MIUI number version something MIUI? Yeah. Do you see that? Yeah. Yeah. Tap on that for 7 times. 0 by 6. Yeah. Does it show that you're 1 step away, 2 step away? It says you are a developer now. Yeah, perfect. So it's turned on now. So cool. So I think for most of you guys it's now enabled. What you have to do next is you have to search in the settings after usually where your about phone was, there you'll see another option of developer options like this at the bottom. In case it's you're not able to see that, you can just search using, if your settings are search, you can search developer options, so, or developer settings. It would be something around that, developer anything it could be. So just search and tap on that, and you will see an option of USB debugging there. USB debugging there basically. Okay, so anybody who is not able to find out that right now, who is not able to find developer options, show of hands please, so that we know everybody is there. Show of hands who has not gotten developer options right now. Okay, has everybody got developer options in their settings now after you have enabled it basically? Okay, Sanskriti has got it, Sanvi has got it, Manan got it. Fine. Okay, anybody who has not got it, please unmute and ask me now, so that you can do along with us, right? So you're not left behind. Okay, so सबको मिल गया developer options और okay ठीक है. So let's assume, okay fine, so you have gotten developer option. तो उसमें अभी आप what you have to do is plug in your phone to your laptop with the cable. Plug it in to your laptop with the cable, right? So it should basically, once it's connected, you will see the charging thing happening. So after you're done that, so after you're connected your phone to the laptop,
just turn on the USB debugging thing. So it will show an option intended for development purposes only. So tap on OK, that's fine. And then the next option you might have is open your Android Studio, keep it open. Just a moment, this connection is... You'll see an option which says trust this PC. So I have already trusted the PC, so it doesn't ask me all again. But you guys can let's say allow USB debugging, and it shows trust this PC. So you'll see a pop-up trust this PC, and then you can choose don't show this message again. So if you select on don't show this message again, it wouldn't ask you that pop-up again and again when you connect your phone. Has everybody been able to reach that? Did you get a pop-up on your phone which asked you to allow or trust this PC or trust this laptop? Anybody who hasn't reached here yet? Yes, okay, Sanvi has gotten that option. Yes, full procedure completed. Okay, Adityan, yes, Adityan, any question, any doubt, or you're saying it's Actually, I didn't follow. I was. Can you repeat the procedure again? So from where did you not follow? Like after attaching the adapter. So basically after you attach the adapter, no, you will see a pop-up which would firstly you have to turn on USB debugging after you attach, and you have to tap on OK, that you have to allow it, and then you will see another pop-up which says trust this PC if your Android Studio is on right now on your laptop. If it is on right now, it will ask you to trust this PC. Okay, so basically if once you have done all of this, right, now let me just share my Android Studio. Yeah, share now. So yeah, so you will see your phone being shown up here, whatever phone it is, you will see that being shown up here. Are you guys there now? Is your phone Yes, sir. yeah, is your phone showing up there? Ensure the Yes. connection is not loose. If it is connected, that means it's properly. If it is loose, then it might. So after you have allowed your phone to trust this PC, your phone name would show up here. Perfect. So I think you guys are getting it. So your phone is showing up there, right? Anybody who is not able to reach here right now, who is having problems, just unmute and speak so that I get to try to solve your problem right now. Dhruvi, Where exactly should the phone be showing up? so the phone basically shows up here on the wait, which screen am I so here besides the play button, this green button, run besides that. Can you see my cursor? Got it. Yeah. Yes, So thank you. yeah, that is where your phone name would show up. So Dhruvi, you are having trouble with the phone? Okay, Dhruvi, was your phone being shown there? If that's fine, then you can probably go. That's not a problem then. Okay, she's left already. Okay, so yeah, so leave your phone like that now. Leave it open, and I'll disconnect my phone because it would be convenient for me to run on my emulator itself. So the bottom line is you should see your phone. You should basically, after you plug it in and you select on allow debugging, you will see a pop-up which asks you to trust this PC, and after you have trusted it, your phone will start showing up here, phone name immediately. So I hope everybody has reached that step. In case you haven't, we'll take that up now after like next 10-15 minutes because the session is ending now. So what we're going to do is we're just going to go to the activity main XML, right? Ignore everything. So if you see like this, go in the rest section, go in the layout, and you will see activity main.xml in your rest, your layout, and your activity main. Cool, you guys see that? Fine. So what we're going to do there is we're just going to enter, and you will see a UI screen over here.
Yeah, okay. So Manan. Excuse me, sir. Yeah, Manan. So when I just click that activity XML button, Mm-hmm. it says design editor is unavailable until after a successful project sync. Okay, so there is some project syncing issues. Okay, fine. So we'll try to do that. So you can stop for now, maybe Manan. We'll look at it. Okay, Others, sir. can you see the screen? Yeah, okay. So you can just see the screen, right? So what you're gonna do is uh, so this is a text view which has word hello world written on it, right? So this text view is basically used in Android to hold your text and its value to display any text. So we are going to play a bit about it. So just tap on this text view. On the right side in the attribute section, here right side attributes, just scroll a bit down, you will see there is a common attributes and there is hello world written on it, right? Change it to whatever you want. So I'm going to change it to hello codigo. And here and this there's a search up on the bottom. On the top there is a search. Tap on search and search size. Just search size, you will see a text size over here. You'll see text size, we'll make it, let's say 30 sp. So your text size increases. And then there's one more thing you can do. You can just tap on search for background on the bottom, and you can just change any color you want. So we're gonna keep it blue. So yeah, so this is like a very basic editing that we have done. Anybody has facing any difficulty in finding these options in the so it's pretty straightforward. Go to activity xml, you'll see a text view already there, right? And then you tap on you press hello codigo and like whatever you want to type. So when you tap on text view, scroll down common attribute, there's text here, you can change your text from there. And then we go up and then we search for size. You'll see text size here, you can change it. Ensure you add sp in front of it. What is sp? Like it's their it's Android Studio's way of measuring text size. So basically it works in the numbers only, you just have to append sp in front of it for the text size. And then you can do the same for background. Just tap on this box and you can choose any color you want and it will change the color for you, right? Anybody who has not been able to understand this can just unmute and ask me. We'll try to get over that. Any confusion here, guys? Everybody able to figure No, this sir. out? Everybody able to figure out? No, sir. Cool. So then I think we're almost there. So I hope you guys still have your phone connected. You have written anything that you want, that you want to see in your first app, right? So just tap on run then. So just tap on run and keep on watching at your phone. Keep your phone unlocked basically. Keep looking at the screen. Here you'll see an install and your app should pop up with whatever name you gave to it. The app should pop up with the same text that you entered and background color that you chose and the project name that you entered. So I gave the project name as test123. So whatever project name you guys gave, you'll see that there. So So- can you repeat this process? So all you have to do Yes, is ma'am. after you have done all this, just press the run button on the run app button on the top. Ensure your phone is still there, the phone name is still there, and just press run and wait. It will load it because since you're running the project for the first time, it will take some time. After a Gradle running, it will show installing. That means the app is now being installed on your phone. And then just ensure your phone is unlocked. Your app would then fire up on the phone. It would, after it's installed, it would directly open up. I unlocked after pressing the run button, and the app isn't showing up yet. Okay, so does it say anything Gradle running? Does it say installer? It's done. No, nothing like that. So basically there's nothing at the bottom, right? You can just tap on this and it would again run the app. So just tap on this run button, it would again run the whole process again. Okay. And if your phone is still unlocked, it will show up. In case it might have installed in the back, it also installs in background if your phone is locked.
So you can just search for your app name, whatever name you gave to the project. You would see somewhere it being installed in your app gallery section. Yes, Monica. Can you go over the background part again? Yeah, just tap on the text view and search for background. You'll see it here. Just tap on this text view and on the upper search bar, just tap background. You'll see. Oh, so I think it worked for Garima. Congrats, Garima. This is your first Android app running, and it's installed in your phone. Now, even if you disconnect your phone, you'll see an APK there. You can just open it, and you'll see that whatever you made is there. Anybody else for whom it worked? For me, it took time to run. Okay, but is it opening now or is it still running? Oh, Sanvi, it's working for Sanvi. Now I closed it. Okay, okay. So is it installed though? It is like stuck. Oh, okay. So, I mean, you're talking the Android Studio is stuck or the phone is stuck? The phone. Oh, the phone is stuck. Just just tap on that all app thing and just slide out the app and turn on and turn off. So I think that should get back for it to run. And I think it has worked for Sanvi. Anybody else who has been able to reach that and get the app installed on the phone? Okay, Manan. Okay, Manan. You can regardless try to run it. It will just show hello world. So it would also sync while you run it. So just try to play it. Press the run button, regardless. So the activity.mail XML is not even that. It Okay. just pops up an error. Okay, fine. So Design editor is unavailable until a success. okay, fine. Check We'll sync. we'll have a look at it. So Monica says she cannot see the run button. Monica, is your phone connected? You will see the run button only if your phone is connected, and you can see your phone name here. If the wire is loose or something, that means the phone is not connected, or the USB debugging option was not turned on. So that does a thing. So what about others? They are were you able to do it? Sanskriti, any issues? Adityan? Adityan, are you stuck somewhere? No, it has been installed. It is installed? Yes. Okay, perfect. So it's installed. So you can try to unplug and see it would you still. Okay, in your phone it's saying it is connected. Okay, we'll have a look at it, Monica, after a while. In my RESTful there is no package called layout. Maybe I didn't make the project correctly. Oh, okay, yeah, maybe that could be an issue. Sanskriti, I'll tell you how do you have to go about creating. Just create. Just go to file, new project. Click on empty views activity, empty views in between, empty views activity. Next, I hope the screen is visible. Oh, is my pop-up not visible? Oh, I'm sorry. So let me just for the ones whom the project itself is giving an error, you can try creating a new project, right? So just to troubleshoot that, so for that what you do is you can just either close and or just close the Android, or the close Android Studio and turn on, you'll see the pop-up of new project, or just go to file, new project, and you'll see an empty views here. Tap on that. Next, name whatever you want to name your app. Ensure it's the language is selected is Kotlin. Ensure the language selected is Kotlin. Name the app and then finish it, and then your project will open. Did you do exactly this, Sanskriti? Okay, fine. Garima, you can is your phone still stuck, is it?
No, now it's okay. Okay, it's fine. You can turn off the developer mode after you have done. I mean, it's not a, and even if it is on, it wouldn't create a issue in normal functioning of the phone. The phone will function as it is normally. But in case you want to just turn it off, you can turn it off, and whenever you are working and you want to test your apps, you can turn it on again. So that just for the precautionary measure. So I think it did run for Aditya. Did run for Sanvi. Mrigank, Ritesh, where are you? What are you guys up to now? Is it working? Yes, sir, it run. It was installed. Yes, sir. Okay, perfect. So even if you unplug your phone now, you can see that the app would still be there. Just if you don't like the name of the app, if you feel कि गलती से क्या ही नाम दे दिया था, you can go to the strings.xml in the values. So it's res values strings.xml, and you can give your name. Let's say Codigos uh, Codigos first app. Right, so yeah. Oh, what's the matter? Oh, so spacing from here is not allowed, so just make, oh yeah, basically from here, if you want to do spaces, you write it in terms of underscores. Curios first app. So this is how you write it in terms of add underscores from here. Sir, can I leave? Oh yeah, Garima, you can, obviously. If you're done, this is what we're gonna do for the session today. Great then. You can flex your first app for this session now. See you tomorrow. So you can change the name from here, values strings.xml, and just rerun the app. And okay, files under builder generated and should not be edited. Oh, sorry, after building it might throw an error. Never mind, let's not fix with the, it might because we built the app. I skipped that part. So we built the app, so it might create an issue if we change the name right now. So just keep it to what it was. I'll show you another way afterwards of changing name if you want to. So so that you don't have to fight with these errors right now. Baki, anybody any issues right now? If you haven't run the app, basically, if like before your first building of the project, if you want to change your name, you can change from here. But after the building of the file, what happens is some files get created when you click on build, and then the name gets inserted in that all those build files. And now since the build files are already created, it creates an issue when you change the file from name from there. So that's like a problem. So I think that was almost it for the session today, guys. I hope all of you have been able to create your first app and have enjoyed or learned something. And I am proud of you if you guys have been able to do this so far. I'm so very super proud of you guys, because it's kind of difficult until here, because this you have to do the phone configuration, you have to do the laptop configuration. It's not that easy of a task. But if you guys have come up so far and have been persistent, you guys should be super proud. From here, it's just you have to code and then run and install and check. So since this was like a very crucial part of being able to connect the phone and the laptop, so great. So yeah, if you have any doubts, ask now. Otherwise, yeah, you're free to leave, and see you guys tomorrow, Sunday, 7 p.m. Thank you. Yeah, Sanvi. The renaming works. It has the name has to be changed between the string part. Yeah, it has to be, but let's not do it now, because since the build files are already ready. In case if you have not run it for once even, right, that time you can change the file. When you tap on run, build files get created on the back end, and the names get added there, so it creates conflicts when you change after running. So it's not advisable to do right now. So you can just try to keep it same of what it was. Others, yeah. Any Okay. doubts? Any doubts? Adityan, Agamya, Anand,
Ritesh. For that issue process that Yeah. All right, Aditya. No doubts. Fine then. You're free to leave. Yeah, Manan. Let's discuss over that. Maybe just share your screen. We'll see yes, sir. what's the issue. Sanskriti, what's Sure. what's sir? I'm facing issue. Say, okay, so you're facing the same. Design editor is unavailable until after a successful project sync.